अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दुआ मलिक और आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक काफ़ी घरों में मौजूद होती होगी, काफ़ी वर्क प्लेसेस पे मौजूद होती होगी, मगर हम सब लोग शर्मिंदा रहते हैं इसके बारे में बात करने के लिए। और क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करते तो शायद हम लोगों में नॉलेज भी बहुत कम है। मगर मैं चाहती हूँ कि आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करें और बताएं आप सबको कि ये चीज़ें शुरू कैसे होती हैं और इनको टैकल किस तरह किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, लारिक, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग प्रीटी गुड, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सेम हियर। मुझे ये बताइए कि अगर हम शुरू करें इस कन्वर्सेशन को, तो मैं आपसे पूछूंगी कि सेक्सुअल अब्यूज़ होता क्या है अरसलान? Well, basically, I pertain no subject matter on this issue, but what sexual abuse really is that somebody has basically come into a contact, basically, which is violating the other person's map of the territory, right? So we're basically violating unke domain ke andar ghus ke, we're doing an activity which was not maybe required. Maybe shayad wo samajhte bhi nahi hai ki uska, what has happened to them. We would want to avoid certain thing like that. But I think primitively the reason why people do it, so if that was the question, I think the major reason behind it would be it's a power play. Sometimes people don't conduct a sexual violence because they're, one intent is the sexual desire out of it, but the other one would be power play game. They want to feel powerful or maybe feel dominant, on the other person. I think that's how it go. अरसलान, जो सेक्सुअल अब्यूज़र होता है उसके एक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते होंगे जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, वो क्या होते हैं? Different scenarios में the traits would be very different. I mean, for example, first of all, let's see the categories. I mean, a sexual perpetrator would have basically, it could be a rape, number one. Rape is a very common phenomena that happens. There might be a child molester. There could be, for example, in terms of incest, incest is जहाँ पे family members are involved. Fourth one could be basically something which is violence of sexual intent, which is non-consensual. So that's the fourth one, and the fifth one is basically non-contact based sexual violence that people do encounter. So every different category has a very different type of a mindset behind it. So if you go one by one, let's say first the rape, for example. Rape is basically the type of individuals that you would see, and that would be basically people who would have immense amount of have been through a lot of abuse themselves in the childhood maybe. These would be people who have gone through a lot of damaged or broken backgrounds that they come from. They lack significant amount of acknowledgement and appraisal in their life. So when they don't have that approval, they want to show a power play game to the other person and basically win over that type of an edge. I think that's the kind of a personality trait that they would have innately inside. Overtly, from the outer look of it, they do have certain warning signs that they do depict also, but it's that sometimes you really don't know how these people think or basically do or operate in the society. It's not really clear. Exactly. अरसलान, मुझे लगता है कि हर लड़की तकरीबन, अगर मैं गलत ना हूँ तो हर लड़की इस अब्यूज़ से बचपन में गुजरती है, और सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के, छोटे बच्चे भी हमारे सेक्सुअल अब्यूज़ से गुजरते हैं। मुझे याद है, अगर मैं बताऊं तो जब मैं छोटी थी और मैं इन चीज़ों से थोड़ा बहुत गुजरी हर दूसरी लड़की की तरह, तो मुझे एक सख्ता तारी हो जाता था, मैं फ्रीज हो जाती थी। मुझे पता है कि मुझे बात शेयर नहीं करनी चाहिए, मगर मैं चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर मेरी कही हुई, मेरी कहानी, कोई भी छोटी सी चीज़ आप लोगों को, किसी भी बच्ची को, किसी भी माँ को हेल्प कर सकती है तो वो ज़रूर करे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ बेटी की। मैं फ्रीज हो जाती थी और मुझे सख्ता लग जाता था और मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई आपको हाथ लगा रहा हो। कभी लोग नज़रें ऐसी देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि औरत के पास सिक्स सेंस होता है, वो पनप लेती है, वो देख लेती है। वो फ्रीजिंग क्यों हो जाती है, वो आप सख्ता क्यों तारी हो जाता है? जो ब्रेन के अंदर हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, इवन नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रीज रिस्पॉन्स। जो आपने ये वाली बात की, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर द फैमिली मेंबर्स टू नो, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट वायलेंस। बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट वायलेंस कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी बिग कॉमन फिनोमेना आई थिंक विच मोस्ट गर्ल्स गो थ्रू। लाइक फॉर एग्जांपल अ गर्ल माइट बी जस्ट सिटिंग इन हर ओन डोमेन, किसी लड़के ने उसका नंबर लिया एंड सेंड न्यूड पिक्चर्स, out of a spontaneity. Now that girl
never consented for it. She never wanted it to happen, but the picture just aroused in the cell phone. So that creates certain amount of responses, but because of lack of training of the children in that particular context, what to do and how to respond, I was surprised that one girl had actually been through sexual abuse and felt that nothing wrong happened. It's because घर वालों ने हमेशा बताया था कि bad touch क्या होता है, and somehow the bad touch that we train people is that these are the spots where you should not touch, but they don't tell कि ये touch ऐसे अचानक से कोई perpetrator आके हाथ नहीं लगाएगा. There will be a time that they will groom the subject. They'll first see कि पहले हाथ लगा के check कर रहे हैं कि is the client retaliating or not. Then the hand would go from palms to all the way up to the arms, then up to the neck, then it goes to the bad spot. So by that time the girl or the boy, अब अगर वो complain या voice raise करना भी चाहें, they won't be able to, because they'll feel कि शायद हमने allow किया है, although allow नहीं किया है, but they'll come going to that guilt feeling. Guilt में चले जाते हैं और shame में चले जाते हैं. अरसलान, जब लोगों के साथ ऐसा होता है, छोटी बच्चियों के साथ या लड़कों के साथ ऐसा होता है, तो इसका जो रिएक्शन होता है वो शायद उस अब्यूज़र के सामने नहीं निकल रहा होता और घर आके अपने माँ बाप के ऊपर निकल रहा होता है. शायद अपने माँ बाप से बदतमीज़ी करना, एग्रेशन दिखाना, रिटेलिएट करना. ये हम अपने आप को इस तरह कैसे ग्रूम कर सकते हैं या अपने बच्चों को ऐसा कर सकते हैं कि हम हर वक्त शायद फाइट और फ्लाइट मोड में रहें, कि जब अब्यूज़ हो रहा हो तो हम उसी वक्त उसको जवाब दे दें. The only thing is कि I think parents have to spend a significant time with the child, and if you don't have adequate amount of ways to how to train a child, there are a lot of YouTube videos that are available. Even if not is there, then contact a person who's at least a counselor who can counsel you how to train your children. One way would be that, but secondly also be observant about what the child's behavior is trying to tell you. So like so the fanicky wali cheese. There are a lot of children who might wet the bed, so that's a behavior that we would want to be very specifically cautious about. If they have toilet issues, they're really scared of going to the washrooms and they're not able to do that. These are some behaviors that are noticeable. I'm not saying they're always based on, but here what are we talking about? We're talking about the statistics of, like, let's say 93%, which was in Tribune, I think it was published, that they have already gone through sexual abuse one way or the other. Even कोई बंदा अगर कोई act कर रहा है and in front of a child basically seeing that act, that's also considered as they've seen a violent picture in their brain. That picture they're not able to comprehend. So any behavior, rona, चिड़चिड़ापन, any type of these type of behaviors reflect. फौरन इसके ऊपर जरूर notice जरूर करें. Have an open discussion with your children. Ask them, guide them around how people are, so that they're more aware. They share at least everything with you, and at least कम से कम time पे पता चल जाए. Responses तो तब बनते हैं जब training हो, adequate amount of training. Adequate training ही नहीं होगी तो response खुद से नहीं आता. Some people do have response कि they might fight it, they might argue, but that's a good thing. But not everybody is designed like that. बिल्कुल. अरसलान, क्या आपको ऐसा लगता है कि shame और guilt दो ऐसे इमोशंस हैं जो सबसे जल्दी इंसान के जहन को जकड़ लेते हैं? यानी कि जब वो गलत नहीं भी होता, एक इंसान खुद अब्यूज हो रहा होता है एक इंसान से, आगे वाले से, और वो खुद ही जो है वो एक एहसास कमतरी में या एहसास जुर्म में चला जाता है. क्या ऐसा है? ये तो बहुत सिवियर इमोशंस हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जो आपने बनाए, लाइक गिल्ट और शेम. हम अगर बहुत बेसिक ले लें, लाइक लेट्स से कि स्ट्रेस, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आम मरहले में होती है. इफ यू आर इन स्ट्रेस, इट्स टेक्निकली रिलीजिंग अ हार्मोन इन द ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड कॉर्टिसोल. If that hormone increases in your brain, आपका frontal lobe, the analytical thinking part anyways shuts down. So you're paralyzed in terms of your thinking anyways just in the moment of stress. So similar thing happens at gussa, and कोई भी emotion, सीधी बात है, अगर if the emotion exists, the intelligence will go down very significantly. So shame and guilt, yes, if they persist, they might basically tell the person to, they might freeze at instant point and they might allow the process to happen. And then जब हो भी जाएगा तो they won't be able to complain about it, because then it creates even more sense of guilt and shame maybe on it. अरसलान, एक और आदत है जो मैंने काफ़ी सारे लोगों में अपने इर्द गिर्द देखी. अब वो आप एक हाईली क्वालिफाइड कोच हैं, आप बताएंगे. अपने आप को बार बार धोना,
नहाने में बहुत टाइम लगाना, बार बार हाथ और मुंह धोना, क्या ऐसा है कि जो लोग ऐसा करते हैं ये एक सर्टेन हैबिट डेवलप होती है, उनको लगता है कि वो कहीं अंदर से गंदे हैं तो वो साफ हो जाएं? These are called patterns, right? But sure, we have to be very observant about this pattern. If this pattern was not a resultant of an abuse, it could also be a pattern of a disorder. For example, अपने आप को बार-बार साफ करना and feeling that you're not clean could also be a depiction of OCD, which is, obsessive compulsive disorder. So it can be that as well, and it can be that as well. But nevertheless, अगर कोई pattern depict हो रहा है जो कि normal routine से different है, we would really want to take, it should alert us at least. At least we should, say कि जैसे बुखार होता है, symptoms होते हैं ना, बुखार होता है, नज़ला होता है, हम लोग उस वक्त we want to go and contact a doctor, to take a little professional advice कि maybe is it viral or is it something that is very innately rooted. I think that's how we would want to look at it. अच्छा, आजकल जो हालात और वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट केसेस आ रहे हैं और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को हाइप दे रहा है। हम क्या लर्न कर रहे हैं? हम ये लर्न कर रहे हैं कि मेंटल इलनेसेस जो हैं वो हो तो रही हैं, मगर उनकी थेरेपीज़ लेना इतना ज़्यादा आसान माशरे ने नहीं बनाया हुआ। एक बंदा, एक इंसान अगर किसी भी मेंटल इलनेस या ट्रॉमा या किसी भी तकलीफ से गुजर रहा है तो थेरेपी लेना इज़ अ टैबू। अरसलान, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? It's not a taboo. Basically, let's first say it it's basically you seeking help. Seeking help and mashwara lena ya seekhna, these are some things that are very beautiful traits of any human being. कोई भी इंसान अगर सीखने के लिए openness दिखाए, I think what's more valuable than that? And coaching and therapy doesn't happen for people who have disorders, so we rather would want to do it for people who are successful and want to even become even more successful. So should people have gone through these cases, I think they should talk it out. I mean, if parents had that leverage with their children that they were significantly communicating, I think that nobat would never come. But if it does, then pretty outbreaks hote hain. Then remember the case that happened in fact of the actor basically, and he had a clash with his wife and the wife went ballistic about domestic abuse, which is okay, but how does that help? My question is that it comes on media, it's flashed, it's channelized, it's even more sensationalized now, and nevertheless when chances of them now getting back together is like almost zero. Neither would the guy seek therapy, neither the woman would seek therapy. It just goes to deterioration. Rather उसको क्यों ना stage 1 पे contain करके save कर दिया जाए? Why should it go to that much? गाड़ी में अगर आग लगती है तो you take a fire extinguisher, you close it, right? You don't wait over there. थोड़ा सा और आग पकड़ने तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं क्यों अकेला? It's an absurd logic. अरसलान, जो आपके पास रिलेशनशिप कोचिंग के लिए आते हैं पार्टनर्स, क्या वो लोग आपको लगता है कि शादी से पहले से अपनी स्टोरीज अपने माइंड में लेते हुए चल रहे हैं जो कि उनकी शादीशुदा जिंदगी को इफेक्ट कर रही हैं? One is the stories, and also stories के अलावा जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उस वक्त the level of their love and intimacy is in a dichotomy. उस वक्त तो नया प्यार होता है ना, infatuation, the amount of infatuation in that love period is really high. So सारी चीजें जो neglect करनी भी होती हैं वो overlook हो जाती है, and then we come into that relationship and bond, right? But over a period of time फिर ऐसा लगता है कि यार ये मैंने क्या कर, so that type of a moment comes. It's not a bad moment to come. It's called plateau. So they've now explored themselves each other very openly and widely. कोचिंग में और रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल चीज ये होती है कि डेफिनेशंस क्लियर होती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अ गाय has a definition of a love and a girl also has a definition of love. Most people who are seeing this now, you can relate to it. For example, एक मर्द हजरात की एक definition है प्यार की कि मैं घर पे पैसे प्रोवाइड करता हूँ, मैं घर वालों के लिए इतना कुछ करता हूँ, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बनता हूँ, ये मेरा प्यार है उनकी तरफ. एंड बेगम जो है वो घर बैठे हुए, मेरा शोहर मुझे व्हाई इजंट ही कमिंग, एंड वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा, वो मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा? वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज बिजी. बोथ लव ईच अदर, प्यार कम नहीं हुआ है, बट द डेफिनेशंस आर डिफरेंट. सो जब वो साथ में बैठते हैं, इट्स ओनली अबाउट टॉकिंग थिंग्स आउट के अच्छा, this is what my wife sees and wants me to do, and this is what my husband thinks, and we strike a balance in between it, right? I was surprised that we did one coaching session and this was amazing result. The girl basically said, अगर मेरा शोहर मुझे सिर्फ 3 घंटे देते, but वो 3 घंटे ऐसे डिजाइन होने चाहिए, so she even gave her a preference of design के ऐसे 3 घंटे हो, and she said कि in return I will allow him to spend 6 days easily and casually, मैं उसको कोई ताने नहीं. And the guy was looking, so 3 घंटे,
we don't realize this, you know, हम लोग क्या करते हैं कि एक काम किया फिर उसको जताया फिर उसके ऊपर barriers, so it kind of like complicates the relationship too much. I think it's a beautiful experience to go for relationship. I went for relationship coaching. I mean, it's a beautiful thing to go through. थैंक यू सो मच अरसलान, इट वॉज लवली स्पीकिंग टू यू। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सराउंडिंग्स में थेरेपीज़ के बारे में और सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में लोगों को शऊर डेवलप हो। थैंक यू।